Hello everyone, welcome back to channel. Today we are going to solve some of the practicals from the chapter of the cost of production. So let's start with the first one. As the question says that the following table shows the total cost of production of a firm at different levels of output. Find out the AVC and MC at each level of output. As we are aware of the fact that AVC here stands for average variable cost and MC stands for the marginal cost. In the question itself, it says it has given the two factors. The one is the output and the other is total cost. Now, how we are going to solve this problem? The first of the fact, we will write out the output, that is 0, 1, 2 and 3. And thereafter, we will write out the fact of TC. TC says that 60 is at 0, then 100, then 130 and 150. As we all are aware of the fact, the value of TFC is constant. This constant irrespective of the fact of the amount of production. The one thing we all know that. And the second most important thing we all know that even at zero production, total cost will not be zero. Total cost will not be zero. That means कि अगर हम जीरो प्रोडक्शन भी करते हैं तो टोटल कॉस्ट हमारा जीरो नहीं हो सकता, because there is the total cost is made with total variable cost and total fixed cost, and we all know that total fixed cost does not remain zero at zero production. So we can simply say that here when the output is zero and total cost is 60, that definitely means the total fixed cost will be 60 and total variable cost will be 0. How we have got to this fact? हमें ये पता है कि अगर कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो ऐसे केस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी हमेशा क्या होगी? 0 होगी. तो अगर हमारे टोटल कॉस्ट हमारे पास दे रखी है और ये पता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये होती है हमारी इक्वेशन. हमसे कहा कि टोटल कॉस्ट हमारी 60 है, आपको टोटल फिक्स कॉस्ट निकालना है और ये भी हमको पता है कि जब आप जीरो लेवल पे आप प्रोडक्शन करते हो तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 ही होता है. ऑब्वियसली ऑन सॉल्विंग दिस फैक्ट वी कैन से दैट टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी रहेगी? 60 होगी. नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर पार्ट. अच्छा, हमने ये पार्ट अगर हमने कैलकुलेट कर लिया, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन. एंड सिंस वी ऑल नो दैट द टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, तो मैंने देखिए 60 60 60 60 सब में फैक्ट नोटिफाई कर दिया. क्यों? हमको पता है द टोटल कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट. Now, how do we going to calculate the value of total variable cost? As we all know about the simple equation, that is total cost is equals to total variable cost plus total fixed cost. अच्छा, आपको ये चीज पता है तो we can simply say that total variable cost is equals to how much? Total cost minus total fixed cost. That means अगर हम अपनी टोटल कॉस्ट में लेट अस से इसको कॉलम 1 मान लेते हैं, इसको कॉलम 2 मान लेते हैं. सो अगर हम 1 में से 2 कॉलम को दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट द आंसर फॉर आवर टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सो 100 माइनस 60 इज हाउ मच? 40. 130 माइनस 60 इज हाउ मच? 70. 150 माइनस 60 इज हाउ मच? 90. Now we have to calculate the average variable. We all are aware of the fact that the average variable cost can be computed when the total variable cost is divided by the number of output or the output of production. तो हमने देखा कि पहले केस में क्या है भाई 60/0, तो हम नहीं निकाल सकते, that is a dash. The next is 40, total is 40 divided by 1 is again 40. Then the next factor is TVC is how much? 70. 70 divided by 2 is how much? 35. Next is 90 divided by 3 is how much? 30. So that is how we are going to calculate the value of average variable cost. Now, the marginal cost can be calculated using the concept or the formula of total cost at n minus total cost at n minus 1. And we can also use the concept of total variable cost at n minus total variable cost at n minus 1. That means if we compare the current total cost or the total variable cost with the preceding value, we find the difference and that difference will be called as the marginal cost. हम सिंपल इस तरीके से marginal cost को अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं. Let us see at first the total cost. As we can see that if we subtract 100 minus 60, we get the answer as 40. 100 minus 30 is how much? 30. And 150 minus 30 is how much? 20. तो इस तरीके से आपका मार्जिनल कॉस्ट आ गया. अगर आपके पास उस टाइम पे टोटल कॉस्ट नहीं दे रखा है, यू कैन डेफिनेटली यूज द सेम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट. 0
40 minus 0 is how much? 40. 70 minus 40 is how much? 30. And 90 minus 70 is equals to 20. That means कि यहाँ पे भी आपको क्या होगा? सेम आंसर मिलेगा. तो we can easily calculate the value of marginal cost either from the total cost column or from the total variable cost column. That's how we basically solve such type of practicals.